Okay, so now we will start JavaScript chapter number 5, page number 60. Okay, and I ask you to read this chapter number, page number 60 and 61. Have you read? I ask you to read page number 60 and 61. Have you read these page numbers? And I have given you one work also. You have to design one basic HTML program. How many students have tried to design HTML program yesterday? Yes, Nikhil, I have checked your work. Very good. Okay, Ayush. Have you faced any issue when you were designing program in HTML? Jaideep, you haven't sent me your work. If you have designed, send it to me. Okay? Whatever you are doing practical at your home, just send it on my number so that I can check and let you know if there is some mistake or there is some chance of improvement. Okay? So now we will start reading this chapter. So JavaScript is a client-side scripting language of web. So we are having two type of languages, either server-side or client-side. So JavaScript is your client-side scripting language. Here is a chapter and brief history. Okay. So JavaScript is a client-side scripting language. It was originally developed by Braden at Netscape for the Netscape Navigator web browser. So as you all know, we have different web browser available nowadays. But earlier, this JavaScript was designed for this Netscape Navigator web browser only, and in 1995-1996 it was first known as LiveScript. So earlier name of JavaScript was LiveScript, but Netscape changed the name to JavaScript. It was created at Netscape in early days of web, and technically JavaScript is a trademark license from Sun Microsoft used to describe Netscape implementation of the language. The overwhelming majority of modern websites using JavaScript, and all modern web browser on desktops, game console, tablets, and smartphones, including JavaScript interpreter. Means earlier the name of JavaScript was LiveScript, but later on Netscape given the name is JavaScript. अभी currently mostly in सभी वेबसाइट्स में जितने भी मॉडर्न वेबसाइट है, बेटर एग्जांपल इज गूगल, यू आर यूजिंग ऑलमोस्ट every day in your life, and that website is also using JavaScript language. Then many web browser like Google Chrome or Mozilla Firefox, all these also using this JavaScript. Then we are using those smartphone, that Android operating system is also written using this JavaScript. Not JavaScript, Java language. Web developer must learn HTML to specify the content of pages. As I have told you yesterday, before learning JavaScript, you must learn HTML to specify the content, then CSS to specify the presentation, and the JavaScript to specify the behavior of your web page. If you want to learn JavaScript, you have to learn all these things: HTML, CSS and JavaScript. So HTML will specify the content. Means simple लिखना है आपको. जो अभी आपका लिखने वाला कंटेंट है without any color, without any design, that you have to do with HTML. Then if you want to give some designing, कि आपको font color करना है, font size change करना है, या फिर आपको कुछ images insert करनी है, that you have to do with the CSS, cascading style sheet. And last, if you want to give some brain, कि अगर आपने जो एलिमेंट्स ऐड किए हैं वो कैसे वर्क करें, अगर आप उस पर क्लिक कर रहे हो तो कैसे आउटपुट आए, कैसे इनपुट आए, तो बिहेवियर ऑफ दैट वेब पेज यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ JavaScript.
Next is about JavaScript. So JavaScript is used to make client-side dynamic web pages interactive. So HTML and JavaScript both are used to create web pages. Okay, but in HTML you can create only static web page, whereas with the help of JavaScript we can create dynamic web pages. So this is the major difference between HTML and JavaScript. With the help of HTML we can create only static. Static means आपने जो उस पर ऐड किया, कुछ भी ऐड किया, वो बस ऐड होगा, उस पर कुछ वर्क नहीं होगा, वो कुछ बिहेव नहीं करेगा. बट अगर आपको कुछ ऐसा वेबसाइट बनाना है जिसमें अगर आप किसी एलिमेंट को क्लिक करो तो क्लिक करने के बाद भी उसमें कुछ ऑप्शंस आने चाहिए, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए. That is your dynamic web page, and dynamic web page we can create with the help of JavaScript only. Okay. Next, the environment to run client-side script is usually a browser. As you all know, yesterday we have designed one program and we have set that program with extension .html, and that was running and that output was coming only in browser. Means जो भी आप इसमें लिखोगे तो उसका जो output होगा या फिर उसको जो run होगा हमेशा किस में रन होगा? एक browser में. The processing take place on the end user's computer. The source code is transferred from web server to the user computer over the internet and run directly in browser. तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए. Without internet, you can run program of JavaScript also. I am speaking very loudly, beta. Jayesh, check audio connection from your side. Okay. JavaScript needs to be enabled in the browser of client computer to run script written in the language. For example, JavaScript code can be executed when users submit the form, and if all the entries are valid, then only it would be submitted to the web browser. आजकल आप बहुत सारे फॉर्म्स ऑनलाइन फिल करते हो, ठीक है? ऑनलाइन फिल करने के बाद जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, अगर आपने सभी एंट्रीज उसमें सही डाली हैं तब तो आपका फॉर्म क्या होता है? सबमिट हो जाता है. और अगर एंट्रीज में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि नेम आपको लिखना था स्मॉल लेटर में, आपने लिख दिया कैपिटल लेटर में, तो आपके पास एक एरर आएगा. ओके, तो वो जब एरर आएगा इट मीन्स आपको कुछ करेक्शन करनी है, देन यू हैव टू सबमिट इट अगेन. सो दैट थिंग मीन्स आपने जावास्क्रिप्ट में वो फॉर्म बनाया है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में फॉर्म आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? वैलिडेशन प्रोवाइड करते हैं. अगर आप कोई फॉर्म बना के उसको सबमिट कर रहे हो, सबमिट करने से पहले आपकी जितनी भी एंट्रीज हैं उनको वैलिडेट करेगा, देन ओनली इट विल allow you to submit. Students, I am getting a lot of complaint. The one who are sharing emojis or any extra content, behave yourself, otherwise I will expel you from this live class. Never allowed you to join any class of your 6th standard. Is it clear? I will give screenshot of this chat box to principal ma'am. So behave yourself. No need to write anything in this chat box. If you have doubts related to this class, then only you can write, otherwise stay properly. Okay? Is it clear to all of you? Pradeep. Joyce, leave this class and rejoin. Maybe your issue will get resolved. Okay? So JavaScript can be executed when users submit the form. You might use JavaScript to check if user has entered an email ID. तो आपके वेब फॉर्म में या फिर आप जो भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो उसमें जितनी भी एंट्रीज हैं, जैसे कि ईमेल हो गया, नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, तो ऐसा होता है ना कि अगर आपने ईमेल करेक्ट नहीं डाली, कुछ उसमें कुछ मिस्टेक की, तो आपके पास एरर आता है इनकरेक्ट आईडी या फिर इनकरेक्ट पासवर्ड. इट मीन्स वो पहले वैलिडेट हो रहा है आपने जो भी डेटा एंटर किया है. अगर वो डेटा आपका एक्यूरेट है, फाइन है, then only you are allowed to submit your form. So all those things we can done with the help of JavaScript only.
Jairaj, you are the only one having screen blurriness issue, having audio issue. So it is 100% sure this issue is from your side. Okay, so just rejoin this class. Is it clear? So next we have uses of JavaScript, means where we are using this JavaScript nowadays. So change JavaScript is used in web pages for several purposes. Some of these are, तो जो आपका JavaScript है वो काफी जगह यूज होता है, ठीक है, उनमें से कुछ है ये चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ HTML एलिमेंट्स डायनामिकली, मीन्स अगर आपने कुछ HTML एलिमेंट्स बनाए, जैसे कि HTML में बटन बनाया है, रेडियो बटन बनाया है, कुछ हाइपरलिंक्स ऐड किए हैं, तो अगर आप उसमें कुछ डायनेमिक इफेक्ट करना चाहते हो, डायनेमिक इफेक्ट होते हैं कि मैंने कहीं क्लिक किया तो मुझे उसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, तो दैट थिंग वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट. नेक्स्ट, रिस्पॉन्डिंग टू यूजर इंटरेक्शन सच एज ऑन माउस क्लिक, मीन्स अगर यूजर कहीं पे क्लिक कर रहा है माउस से, उसको उसका रिप्लाई मिलना चाहिए, so that means आपका डायनेमिक वेब पेज है वो. नेक्स्ट, क्रिएटिंग एनिमेशन. एनिमेशन क्या होता है कि अगर आपने कुछ मूवमेंट दिखानी है, कुछ टेक्स्ट को मूव करना है, कुछ एलिमेंट्स को मूव करना है, so that we can also do with the help of JavaScript. And the last, validating user input. So this point we have discussed in last slide. वैलिडेटिंग मीन्स आप अपने फॉर्म पे जितनी भी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, जितनी भी इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर रहे हो, इफ यू वांट टू वैलिडेट कि आपने नेम सही से डाला है, अपनी क्लास सही से डाली है, अपना आईडी अच्छे से डाला है, अपना पासवर्ड करेक्ट डाला है, सो ऑल दोस थिंग्स वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट. So these are the basic usage of JavaScript. Is it clear to all of you? So this is just a theoretical portion, but from this theoretical portion you have to learn many things. First of all, JavaScript is your client-side scripting language. Then the earlier name of JavaScript was LiveScript. So basic points you have to remember. Okay, so first, client-side scripting language. First one. Then earlier name was LiveScript. Then designed for Netscape browser or Netscape Navigator browser. Then with the help of JavaScript, you can create dynamic web pages. Then use or you can apply validation with the help of this JavaScript. So these are some major points you have to learn about JavaScript. So next we have advantages of JavaScript. This we will cover in next class. Okay, because today many students are having issues of screen blurriness and audio. So if I will continue this class, there is no use because students are continuously typing that they are having network issue.